आज आनंद है, निरानंद है, श्री माता जी का जन्मदिन है। आज आनंद है, निरानंद है, श्री माता जी का जन्मदिन है। धरती भी आनंद से डोले, अंबर पर भी पड़ गए झूले। धरती भी आनंद से डोले, अंबर पर भी पड़ गए झूले। मुबारक मुबारक जन्मदिन मुबारक, मुबारक मुबारक जन्मदिन मुबारक, मुबारक मुबारक जन्मदिन मुबारक, मुबारक मुबारक जन्मदिन मुबारक, मुबारक मुबारक जन्मदिन मुबारक। मुबारक मुबारक जन्मदिन मुबारक। मुबारक मुबारक जन्मदिन मुबारक, श्री माता जी तुमको जन्मदिन मुबारक। मुबारक मुबारक जन्मदिन मुबारक, श्री माता जी तुमको जन्मदिन। Happy birthday to you, happy birthday to you, mother. Happy birthday to you, happy birthday to you, mother. Happy birthday to you, happy birthday to you, mother. Happy birthday to you. मुबारक मुबारक जन्मदिन मुबारक, मुबारक मुबारक जन्मदिन मुबारक, मुबारक मुबारक जन्मदिन मुबारक, मुबारक मुबारक जन्मदिन मुबारक, मुबारक मुबारक जन्मदिन मुबारक। मुबारक मुबारक जन्मदिन मुबारक। मुबारक मुबारक जन्मदिन मुबारक, श्री माता जी तुमको जन्मदिन मुबारक। मुबारक मुबारक जन्मदिन मुबारक, श्री माता जी तुमको जन्मदिन। I'm very joyous today to see all of you celebrating my birthday. The month of March is regarded as springtime in India, Madhumas. That's what you sing, Madhumas. And as you know, 21st March is the equinox. So it sort of is a balance. And also the center of all the signs you have in the horoscope. So many centers I had to achieve. And also I was born on the Tropic of Cancer, as you are on the Tropic of Capricorn. And Ayers Rock is on Tropic of Capricorn, just in the center. So many combinations had to be worked out. So the principle of ascent is to be in the center, to be in the balance, to be in the maryadas of the center, to be in the boundaries of the center is the principle. Puja, because today is my birthday, and so the puja on a birthday should be such that it should be more deep, more heartfelt, more joyous, than it should sort of go on a ritual side. There's no need to have much rituals because we are in a joyous mood celebrating our mother's birthday. Already we are there. Whatever is needed for you to be there
is not needed now because you are in that joyous mood. Right? So, only thing, a very short puja I have to claim is to be done today is a birthday. There's no need to have a huge big puja, all that is needed to bring out all the deities. They are already there, up there. Just see the vibrations they are emitting. They are so very happy that you are celebrating my birthday. So in every puja, what we have to do is to awaken them, ask them to be kind to you, this, that. Though they are awakened in me, you want them to be. But now they are all awakened in you. We don't have to have big puja at all. There's no need at all. And this is what I have told Modi, that you have a very, very short puja. And a very short puja should be all right. So today's talk was just like a puja. Remember that this is meant for you when you are not Sahajogis. Today it is not meant for you. So you won't feel guilty. First remember you are Sahajogis, you are my children, and I love you very much, very, very much. So please have confidence in yourself, complete confidence in yourself. Alright? That's the greatest thing you can give me today as a present. May God bless. आपण सर्व या शुभ प्रसंगी आमचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात जमलात, तेव्हा आता कलियुग काही संपलेला वाटतो. कारण आईचं एवढं महत्त्व कलियुगात होईल असं वाटत नव्हतं. आणि या स्वर्गीय आनंदात सगळ्यांचा, इतक्या माझ्या मुलांचा समावेश होईल असंही वाटत नव्हतं. हे जे काही घडलंय ते इतक्या थोड्या अवधीत की विश्वास वाटत नाही. सगळी परमेश्वराची कृपा आहे. तुमच्या आनंदात आमचा आनंद आहे आणि तुमच्या इच्छेतच आमची इच्छा आहे. स्वतः आमचं काही अस्तित्व राहिलेलं नाही. जी सहयोगांची इच्छा तीच आमची इच्छा, त्यांचं जे जीवन आहे तेच आमचं जीवन आहे. आपल्याला बरंच कार्य करायचं आहे. आतापर्यंत मिळवण्याचं कार्य तुम्ही केलं, आता देण्याचं कार्य करायचं आहे. एकजुटीने श्रम पडतील, थोडे बहुत मेहनत करायला पाहिजे. सहयोग हा वाढवलाच पाहिजे, त्याशिवाय अन्य मार्ग नाही. निदान महाराष्ट्रात सहयोग घरोघर पोहोचला पाहिजे. त्यानंतर इतर स्थळीसुद्धा हे कार्य जोरात होऊ शकतं. जसा हा महाराष्ट्र आहे तसंच त्या नावाला साजेसं कार्य झालं पाहिजे. आजच्या या शुभ दिवशी माझे अनंत आशीर्वाद तुम्हाला आहे. तुमच्या आत्मिक उन्नतीत परमेश्वर तुमचं सहाय्य करेल आणि तुम्हीसुद्धा सुबुद्धीने अत्यंत उच्च पदाला जावं. इतकंच नव्हे तर जेवढ्या आमच्या शक्त्या आहेत त्या तुमच्यात स्थापित व्हाव्यात अशी आमची पूर्ण इच्छा आहे. परमेश्वर तुम्हाला सगळ्यांना आशीर्वादित करो. सारे सहयोगियों को हमारी ओर से अनंत आशीर्वाद. इतने बड़े तादाद में आप लोग आज यहाँ पर हमारा जन्मदिवस मनाने के लिए पधारे. मैं किस तरह से आपको धन्यवाद दूं.
मेरी तो समझ में नहीं आता है। बाहर से भी इतने लोग आए हैं, और अपने भी देश के इतने लोग यहाँ सम्मिलित हुए। ये देख करके हृदय भर आता। न जाने हमने ऐसा कौन सा अद्भुत कार्य किया जो आप लोग हमारा जन्मदिन मना के यहाँ एकत्रित हुए। आप लोगों का हृदय भी बहुत विशाल है। कि आपने आज के दिन इतने दूर स्थित इस जगह में आकर के हमें सम्मानित किया। हमारे पास तो शब्द ही नहीं है कि आप लोगों से बताया जाए किससे हम कितने आनंद से पुलकित हो गए। जो आपने मेरा आदर सत्कार किया उसके लिए मैं बहुत आपसे धन्यवाद कहती हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने चाहा कि आप लोग एक एक आदमी 100-100 आदमियों को पार कराइए, बस इससे ज्यादा कोशिश करिए। एक अगर निष्ठा हो तो हमारा वादा रहा कि आप बहुत सहज और सरल तरीके से 100 आदमियों को पार करा सकते हैं इस साल में। सबको अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद।